biggest question over here. Okay, chaos from meaning hochi je disorder state. Okay, sometimes people they say as generator of disorderness alla ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଜେନେରେଟର ଅଫ୍ ଡିଜର୍ଡରନେସ୍ ଯେତେ ତମର ଡିଜର୍ଡରିଟି ରହିବ ଯେତେ ତମର ଡିଜର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ chaos ବୋଲି କହିବା. Okay, then what is the difference between randomness and chaos if you ask that question? Okay, chaos ମାନେ କ'ଣ randomness ରେ ବି କ'ଣ it is some kind of disorder. Okay, but still there is a different meaning for the chaos and randomness. Okay, that actually if you look for the chaotic dynamics, then only you can say that what are the things are they are random, okay, and what are the things are is called chaos. Chaos hoji there are in basically there are two types. गोटे होची तमरा डिटरमिनिस्टिक आ गोटे होची नॉन डिटरमिनिस्टिक. ओके, जो माने को दरकार अछि से माने लेखो बुझला. सो बट एवरीथिंग यू विल गेट इन इंटरनेट. Okay, mostly I will speak whatever is important. You can write down and you can ask me the question. Okay, you can ask me any question related to that. So one part is called your deterministic chaos and another part is called your non-deterministic chaos. So deterministic it is a chaotic system, but you can predict something. ना तमे ताको prediction करि परियो. You doing some analysis or something. Right? You can predict माने कोन you can say something. Okay, for example tomorrow if you look at the economics data जो tomorrow financial fluctuation is happening, if you see the financial data or meteorological data, okay, they looks very aperiodic. If something is aperiodic, then it is quite random or it's something is going to predict it. Okay, so after 10 years, what will happen to the economy of the world or economy of the country, or what will happen in the next year, weather pattern. Okay, these are the questions you can ask. If it is a deterministic system, that deterministic system you can predict something and you can say in next 1 year or 2 years something happens. Okay, that's called prediction, future prediction. For example, if you look at the COVID-19 situation, okay, today, I mean, how many people are there getting infected? Okay, then you can predict something. If you model the system, you can predict something that in the next year or something like after 2 months or after 3 months or after 4 months, how many people they will get infected in a particular region. That prediction can be done if it is a deterministic system. The motion of these people, actually, the way people they are traveling here and there. Okay, it's not like a order manner. If it's a order manner, the COVID-19 spreading may have stopped. So they orderly they can have stopped it today. But you cannot control the human being. Okay, there are many parameters are there. Many parameters there are different kinds of people, different mindset, different kind of people are there. Okay, and they are associated with some parameters. Similarly, if you take a weather modeling pattern, so the temperature, greenhouse effect, all these parameters are there. So that's the reason it is very much in the parameter space. Okay, then suppose if you do an experiment, okay, then you will get some data. Then what you do, like this old man, okay, he is looking the data. So this is actually at a particular time. This is some data, computer generated data. Okay, you can think of this is a practical data. And this person actually wants to predict something. The data will be looking like this, then what will happen in the next day? So can you say something in after 1 year or something like that? What will happen to this? First of all, you have to do a visual inspection of the data. Then only you can say something. Okay. So first you have to look the data, how much periodic it is. If you want to look the data, then what you have to do is this person is actually using a lens. Put a magnifying glass.
So what you have to do, you have to zoom it, as much as possible closely you have to look at it. Okay, जदि ए मुंडर से मुंडर देखियो तुम जानि परिबनि जे what is happening in the data. So a periodicity only you can observe, you can take a part of it and you can zoom it and see how a periodic a point को आसीला पय हेले ताको केतेटा period माने केतेटा step देला परे एमिति गोटे point आसतो matching to this point. Let's say some, if you consider over here, you know, a point, a value, suppose this value is some value, then a value को आसला को हेले ताको बहुत गुडे step नबा को पड़े. So large number of step पर same steps will get reproduced. Okay, माने पर point 2 आज date में पाई चलो. Okay, that point 2, you know, it can take a long time to get that point 2 also, but it may take a short time also, you know, to get the point 2. So it depends on the periodicity. कितने period का data. If you take a sine function हेले तमरो कोन होची जो peak टा आसुची से peak टा किछ समय पर तुम पाई जाय because there is a single frequency. Okay, cos function में भी गोटे single frequency. सर हां, any question? जोटा अपन माने जूम करिया कथा कहिले कि जूम कले मनकर पीरियडिसिटी हमें ये कर परिबा तो एमिति भी हे पारे गोटे ग्राफ ता जोटा कि शॉर्ट पीरियड भितर बहुत माने इरेगुलारिटी आसीथिबो बट लॉन्ग रन रे तार गोटे किछिटा स्पेसिफिकेशन आस्तु लाइक मन किछिटा ग्रो करथिबो या फिर माने हेल्प करथिबो लॉन्ग रन रे सेटा बेसी जणा पड़थिबो सेमति भी हे परिबो. So that part actually you have to look at it. देखो गोटे जगह रे कोन होय ना इन ए बिगर पीरियड हला माने कर तमरो ECG डाटा टे नउछ हला in the 72 second, let's say 72 second भीतर there are many small peaks are also there बुझले किंतु हमें जनरली कोन से 72 सेकंड रो गोटे पीक गुडा का हमें नउछ जनरली बुझ पर चेक नहीं but in between that there is also periodicity is there उसका ता भीतर भी छोटे पीरियड गुडा का अछि. The question is the which part you are interested, whether you want to do the modeling of the smaller part जे गोटे पीरियड रो आ माने कुछ करलन गोटे ECG सिग्नल रो जो पीक थारो नेक्स्ट ECG सिग्नल रो पीक त तम पाई इंटरेस्टिंग or whether it is interesting to take like 10 peaks of your ECG signal सेटा तम ऊपर डिपेंड करछ जे तुमको जदि डॉक्टर कहबो नहीं हमें गोटे साइकिल रो ही हमें इंटरेस्टेड. Okay, then I can know about the पेशेंट रो कोन होची ना तर ब्रीथिंग का से साइकिल ऊपर डिपेंड करछ सेति पई जो छोटो सिग्नल अछि जूमिंग रीजन त सो छोटो रीजन को तमे नहीं न पारो. So based on your physical situation what you have to take is that मु को रीजन रे इंटरेस्टेड एक्चुअली द इवेंट जो जिनिसटा ऑकरिंग होची हला जो क्राइसिस हो कि जहां भी ऑकरिंग एटा केते पीरियड ऑफ टाइम सेही पीरियड का तुमको डिटरमिन करिबा पड़िबा. देयर इज ए मैथमेटिकल वे to determine that period. Okay, if you know that period then you have to zoom that part. It's not like randomly you have to take a part and zoom it. So why I'm saying that is that actually you know you have learned about like your correlation हला किछि समय पर्यंत पॉइंट मानकर डाटा पॉइंट्स मानकर देयर कोरिलेशन था तापर एक्चुअली दैट कोरिलेशन एक्चुअली ब्रेक्स. कोरिलेशन कैनॉट बी फॉरएवर हला जो पॉइंट पर्यंत कोरिलेशन थिबो दैट इज द पार्ट यू हैव टू टेक इट. Okay, and zoom it and see it, then you will see what kind of aperiodicity is there. Which part है? So you have to find a correlation time. Say correlation time भीतर तुमको analysis करने को पड़ेगा. Otherwise there is no meaning. हला. So this person what is taking is that actually this is just a rough idea that you have to zoom. जो माने सब experience लोग से माने कही देवे जे what is the periodicity. Okay, for example if you take a ECG data तो 72 सेकंड पर तमरो कोन होची पल्स रेट ता नेक्स्ट आउटर बॉडी जाउची बुझे लागनी. सो 72 सेकंड बीट हार्ट बीट गुडा का होउनी से सही सेकंड भीतर से माने कहि देबे जे नाही एटा गोटे पीरियड सेटा गोटे पीरियड. सो पर्टिकुलर जो मेजर पीरियड थिबो दैट पीरियड यू हैव टू एक्चुअली सी इट केयरफुली एंड लुक फॉर द एपीरियोडिसिटी. जदी बहुत गोटे एपीरियोडिसिटी अछि एपीरियोडिसिटी माने कोन बहुत गोटे एपीरियोडिसिटी रहय गला बहुत गोटे फ्रीक्वेंसी रहय गला से हला जत्ते फ्रीक्वेंसी रहइबो बुझ परछन जत्ते की तमरो फ्रीक्वेंसी रहइबो सेति की तमरो कोन हो प्रेडिक्शन लेवल टा यू नो प्रेडिक्शन लेवल टा एक्चुअली डिफिकल्टी हेबो बिकॉज़ यू नो डायमेंशन एक्चुअली इंक्रीजेस. यू टेक ए रैंडम डाटा कंप्यूटर रे गोटे रैंडम डाटा टे जनरेट कर. ओके, रैंडम डाटा जनरेट कला परे यू सी इट प्लॉट करी की ताको देखिबो हला तार किछि माने
बुझिबे ए मुंडर से मट from the beginning to the end, if you take a 10 second of simulation karo some arbitrary time, if you take it a 10 second ताको pattern भितर there is no particular pattern, ताकर किछि pattern ही न थाए बुझे लगने, that's why it is random. काहे कि तार pattern न थाए, तार main cause होछि जे that is a high dimensional system हला. high dimensional system माने high degrees of freedom बुझ पर चले. so each degrees of freedom actually it contributes to one time scale बुझ पर चले. जो जति के degrees of freedom थो सेति के टाइम स्केल सेठी रहइबो आ जति के लार्ज नंबर ऑफ टाइम स्केल थिबो प्रेडिक्टेबिलिटी सेति के डिफिकल्ट. ओके सो ए chaos ता कोन होय ना you know there is a low dimensional chaos गुटे भी अछि आ गुटे होछि तमरो high dimensional chaos आ गुटे होछि तमरो non deterministic chaos. low dimensional chaos I will show you over here. high dimensional chaos also I will give some idea, and non deterministic chaos होछि सेटा होछि तमरो non coordinate that is traveling towards the randomness बुझि पछे. सो ए chaos का आसिला कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क इट. ओके chaos का आसीबो कोड. फर्स्ट ऑफ ऑल जते बेला हम गोटे सिंपल प्रॉब्लम पे सॉल्व करूचे, जे कोनो से सिंपल प्रॉब्लम पे जते बेला हम सॉल्व करूचे कोन नोछु ना तमरो जे कोनो से गोटे इक्वेशन ते नियो हार्मोनिक लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर समथिंग हला. सेते बेला द सिंपलेस्ट इक्वेशन व्हाट यू राइट इज ए लिनियर इक्वेशन हला. लिनियर इक्वेशन लिखले कोन हो तमरो x वर्सेस y टे प्लॉट करिवा बोले यू विल गेट ए लिनियर ग्राफ. किंतु सेठी जदी नॉन लिनियरिटी तमे ऐड करिवो, ओके नॉन लिनियरिटी धीरे धीरे ऐड करिवो बोले से ग्राफ रो शेप ता अकॉर्डिंग टू दैट विल गेट चेंज. जति कि नॉन लिनियरिटी ऐड करिवो, adding the non linearity is basically you are giving the extra frequency to the system hela. For example, if you take a straight line equation you add some sine function hela. sine function add kale gutte frequency paila seti puni again cos function if you add another frequency you get. Suppose you will add x cube over there, then you add x to the power 4, then you add x to the power 5, x to the power 6 jette to me add and kari जाओ सेति की तमरो कर्विनेचर ता आसे हला. so you take a graph y is equal to x, you plot it, y is equal to your x cube, you plot it, y is equal to x square, y is equal to x4, y is equal to your x6 सब जगह पावर गुडा को प्लॉट करो अप टू द 10. okay you will see more fluctuation in the graph. more fluctuation माने कोन जते तम पावर टा बढे बढे जाउ छ सेति की तमरो नॉन लिनियरिटी टा बढे बढे जाउ छ. so non linearity is one of the root to the chaos हला. जे कोनोसी सिस्टम रे तमरो जति नॉन लिनियर रहला सेही सिस्टम रे देयर इज chances high chances that you will get the chaos हला. so one of the statement you can conclude that non linearity is the root to the chaos हला. non linearity जति आसीबो सेटरे chaos आसीबो. chaos आसीला परे तार स्पेसिफिक characterization you have to take it and you can say that this is a low dimensional chaos or it's a high dimensional chaos or it's a non deterministic chaos. okay so chaos can be actually you can divide it into two parts. One is non deterministic and one is deterministic, and mostly we are interested in deterministic chaos. deterministic chaos को ताको पुनी आ दिभाग कर करियो गोटे होची तमरो low dimensional आ गोटे होची तमरो high dimensional. low dimensional वाला केते dimension जदी 1 8 2 8 3 8 4 8. okay so up to the 4 or 5 you can say this is a low dimensional chaos. जदी dimension तमरो जदी 7 8 9 you know ए वाला सेटा होची high dimensional chaos. आ जति की high dimension हे दिबो that means you are losing your predictability. सेति की तमर predictability loss करिवो. okay जदी तमरो dimension if your dimension increases the predictability is very very less, because you know if you take a random data the dimension is very very high. That's the reason there is no prediction on that. You cannot predict it. okay किंतु कंप्यूटर रे जो random data तुम जब create करते हो, I don't know whether you are doing or not, you generate random data that is called your pseudo random number हला. कंप्यूटर देखियो that's called pseudo random number. pseudo random number माने कोन प्रथमे गोटे सेट ऑफ random number बाहर दियो तापर पुनी से गोटा का आउटर जनरेट. okay कंप्यूटर रे हमें परफेक्टली रैंडम नंबर टा जनरेट करि परिबा नाही, बिकॉज़ यू नो द सिस्टम इज लाइक दैट. ओके बिकॉज़ द एल्गोरिथम इज लाइक दैट हला. सर सेटा डिफरेंस कोन आसीबो लाइक माने जोटा रैंडम डाटा एंड सूडो रैंडम भितर डिफरेंस ता कोन आसीबो? रिपीटेशन है माने करो
20 lakhs की 30 lakhs पर मनकर 0.2 टे पाइछ ना जनरली हमें रैंडम अछि बोले कोन मु 0.2 जो थरे पाइछ बोले मु से 0.2 टा आ पाइबा कथा नुह करे लाइफ टाइम पर्यंत जेते दिन हम प्रोग्राम रन करियो बुझ पछे किंतु से 0.2 टा माने कर आफ्टर द 10 lakhs रन और 20 lakhs रन बुझ पछे माने रन माने कोन अच्छा टाइम स्टेप सेति की टाइम स्टेप माने टी टा तुम बडे बडे जाउछ ना t = t t0 t1 t2 t3 t4 t5 एमति कर जाउछ माने को से पॉइंट आउट माने टी टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 5 रे आसीगला बुझला 1 लाख पॉइंट पर आसीगला ताकू ताहले कहबो कोन जो रैंडम नंबरटा मोर जनरेट हेछि सेटा पुनी आउ थरे रैंडम नंबर से सीक्वेंस ता माने कोन इट्स ए रैंडम नंबर बट इट्स नॉट ए प्योर रैंडम बुझ पाछ प्योर रैंडम नंबर एक्चुअली किछि रिपीटेशन होबा कथा न ताहले ही हमें रैंडम नंबर कहबा जदि हमें 0.2 टा नाउ आई एम गेटिंग इट आई शुड नॉट गेट द 0.2 at the later stage of time okay किंतु you know in computer algorithm ये सब जिनिस रे actually you know after a large number of time बहुत माने large number of time that will get okay but हमें सेति के टाइम पर्यंत जे तो कंपटीशन करूनी हमें कोन गोटे लिमिटेड 2 days की 3 days रे गोटे रैंडम नंबर जनरेट केते रैंडम नंबर जनरेट करी करी केतेटा करबो लेट्स से यू जनरेट योर 10 lakhs or 20 lakhs or 1 crore 1 crore is sufficient for do some kind of calculation okay so you are not generating the random number a huge number if you are doing a huge number then it will the calculation will be more complicated so pseudo random number hele bhi amar kichhi problem nahi ला किंतु कंप्यूटर रो एल्गोरिथम जोटा अछि से सूडो रैंडम नंबर जनरेट करे एटा मन रखता एमिति को कंप्यूटर नाही जो कंप्यूटर रैंडम नंबर रिपीट होनी ओके दे विल बी गेट रिपीटेड आफ्टर सम हला किछि समय पर माने लॉन्ग टाइम पर जदि इमीडिएटली जदि रिपीटेशन होछि बेल से रैंडम नंबर इट्स नॉट ए गुड एल्गोरिथम से रैंडम नंबर कैलकुलेशन उडा के तमे यो माने तमरा जो कंप्यूटेशन और एनी काइंड ऑफ योर रिसर्च वर्क यू कैन नॉट यूज ओके you have to write a code in such a way that should give a very good set of random number okay how do you test that random number तुम तापर कहबो जे कंप्यूटर जनरेट करले सेटा रैंडम नंबर ना काई हला तुमको पुणी you should see physics टा करा you should have a valid reason बुझ पाछ physics तुम जेतले करू छ जे मोइटा को रैंडम कहबी माने काहे की कहबी से that question you ask okay so तार भी आंसर अछि हला बुझ पाछ so there are different way to answer that question गोटे क्वेश्चन होची तमरा कोरिलेशन ताको पॉइंट भीतर रही so I will come to that how do you distinguish between randomness and chaos okay so the question is that till now the nonlinearity is one of the things which actually brings the idea of the chaos and nonlinearity is the root of the chaos so ame kon dekhu che if you take a system hela that system may be like your linear system out hoji tamara nonlinear system okay linear system we are more familiar okay we have seen lots of system in linear system okay so if you take the definition okay linear mane linear system to be maybe a jo definition you can it's a mathematical definition okay so one of the principle it always is the superposition principle I can add it okay so f of x plus y is nothing but equal to your f of x plus f of y la and homogeneity I will get it homogeneity means if I multiply some constant of alpha okay in the x that is equivalent to multiplying your alpha into fx a principle data se mane you know they will satisfy jodi eta satisfy करूथिबे से माने होचंती linear system हला ए बोलिया तुम जे कोनसी गुटे linear function नियो ए बोलिया लिखियो देखियो they will get satisfied okay but non linear system हेतिबे बोले तमर कोन होची ना जो आउटपुट गुडा को जोटा बाहर होची not related to the input देखि कि तमे आउटपुट कहि पारियो आउटपुट ता केते हेबो तुम कहि पारियो if it is a purely non linear system हला मु जदि आउटपुट जदि प्रेडिक्शन इमीडिएटली कर परछि ताले सेटा होची linear system हेतो so input is not proportional to your output is not proportional to your input kete change hebo input को देखि तुम कहि पारियो जेमिति मु जदि input देखि कहि पारंती आज डेट रा कोन financial fluctuation the economic data today data if I look at it just input data and if I can predict some data then I will be you know I will be in a good position but I cannot do that okay so you have to do a rigorous nonlinear analysis then only you can say what will be the output after 1 month or 2 months
Okay, another is that nonlinear जो system होती है, second point, nonlinear system actually is dynamical system. माने रखता है dynamical माने something is changing with time. Okay, जे कौन सी system dynamic जो भी है, dynamic माने हो चुके हैं. Just 1 minute, हला. Okay, so in a nonlinear dynamical system, actually, dynamical means it's changing with time, and this nonlinear system may be appear like a chaotic system. It can be appear like a unpredictable system. It can be counterintuitive. Okay, and you cannot break into like a linear system. ताकि तुम्हें you cannot break it. But a non-linear system पे अच्छे वाला ताकि तुम्हें break करी नहीं linear system को आने वाला है ना more difficult. Okay, there are some techniques are there to break it, but simple non-linear equation you can break it. But जोटा कि तुम्हारा highly non-linear equation गुड़ा को ताकि break करी कि ना simple non-linear linear system को आने पड़ी वाली. Okay. So next question you can ask, why are this non-linear system is difficult to solve? काहे कि हमें difficult feel करते non-linear system solve करिए पे. So one of the thing is that linear system can be broken into parts, but non-linear system it can't. It is very difficult to break into parts because they are correlated. मन करो तुम्हारा x गोटे variable, y गोटे variable अच्छी वाले x variable, y variable पर such a dependent that we cannot break. We will lose the physics. Okay, so जब तुम्हें किसी जानने को चाहते हो non-linear system, in many cases what people they can do is that they can use a geometric reasoning, है what a geometric reasoning to draw the trajectory through phase space without actually solving the system. यार माने होचे देखो. This is the one thing I was telling in the class also. What is the need of the phase space? खाली हमें कौन पोजीशन मोमेंटम हमरो जनरल डेफिनेशन होची कौन पोजीशन और मोमेंटम स्पेस रे होची फेज स्पेस इट्स नॉट एक्चुअली लिमिटेड टू दैट. ओके, सो ट्रैजेक्टोरी जोटा होची हला ट्रैजेक्टोरी माने कौन ना ट्रैजेक्टोरी इज ए पाथ हला इफ द ट्रैजेक्टोरी इज प्लॉट इन द फेज स्पेस माने कौन फेज स्पेस रे गोटे जिनिस रही तो सेटा होची तमरो टाइम टा रही हला position of momentum देखलो कि हमें कौन p versus t की x versus t plot कुछ no that's the individual graph. So what you do is position versus your x हला sorry position versus your momentum you plot it ताला हमें 2 dimensional ले गोटे set टा जानी जीवा. If you take a harmonic oscillator हला harmonic oscillator मुझे तो p versus x graph टा जाना immediately I am getting some kind of ellipse. इलिप्स टा मुझे पहले प्लॉट कर दो छी तापर मो जानो छी जे कोन ए फेज स्पेस ट्रैजेक्टोरी टा एक्चुअली एटा कोन सेटा होची ओपन होची ना क्लोज होची इट्स लाइक ए क्लोज हला क्लोज हेले मु जानि जेबी जे द सिस्टम इज बाउंड हला आ जदी सिस्टम टा जदी बाउंड हेतो ताले मते इजीली आई कैन सॉल्व इट ताले मु कहि परिबे इक्वेशन को मु सॉल्व करि परिबे ए विषय किछि कहि परिबे यार एनर्जी कैलकुलेट करबे जदी एटा ओपन सिस्टम टाइप रे हेतांता बोले मु कोन करबे इट विल बी मोर डिफिकल्ट. So one of the things जितना variable था x, y, z जितना variable था और जितना dimension. So what actually the experienced people they do is that they plot the trajectory. So trajectory को केमिति plot करते हैं not with respect to time. They plot with respect to another variable. हला गोटे variable से तो आउटे variable को plot करते हैं x versus y. Okay, x versus y or x versus z or x versus जहाँ भी था जेतेटा तमरो डायमेंशन थिबो
ହେଲା ସେ ଭେରିଏବଲ ଗୁଡା କଣ ନା that variable is changing like dx by dt dy by dt dz by dt ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରେ x ଭେରିଏବଲ ମାନେ dx by dt ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି y ଭେରିଏବଲ ମାନେ dy by dt ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି z ଭେରିଏବଲ ମାନେ dz by dt ର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଏଟା ହଉଛି 3 dimensional system we will come to that okay so ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତମର ହଉଛି ଯେ you have to plot the trajectory okay in the phase space. Phase space माने simple a chaotic system माने करे x versus y, okay, y versus z or x versus z. You don't have to look for the position and momentum and all. That is a limited, that's a कौन है तो सेटा तुम्हें पढ़ुଥିଲେ कोनटा basic classical mechanics जोटा पढ़िया छ plus करे हमें position versus momentum ता काई ना से to start है from there actually we started the phase space calculation. That's the reason they immediately they say that phase phase space means your position, momentum, coordinate system. But if you are looking in the chaotic system, phase space माने कौन? The main basic aim of the phase space is to remove the time dependence. बुझ पर लगने? इतने हमें one of the general definition होती है time dependence को remove करते हैं. Time dependence we are not looking for it. Okay, we are looking for the variables. Right now. ताहले तमरा linear system को तमे चिंता करो if I take a linear system over here harmonic oscillator टे निया तारा equation तमे जानी छ f is equal to minus kx and k equal to a constant and that this k should be greater than 0 why it should be greater than 0 that answer you can give right okay k negative है परियो k cannot be negative it should be a positive it's a spring constant okay it should be a positive quantity and you see in this expression your f is directly proportional to your x and another thing you see why you know it's a straight line equation किछ ना एटा होय गोटे straight line equation f versus your x graph को जो plot करिवो एटा होय तम ग्राफ हला a कौन figure 1a 1.1a okay you will get a graph like this it's a linear function that by linear line te pai this is the linear relationship which is shown in this figure. But if you calculate the potential, okay, the corresponding potential, then what you have to do is you have to integrate. If you integrate, you will get your half kx square. So the potential को मुझे plot करेंगे, I will get some parabolic curve because x square is there, so you will get half kx square, and immediately you can see when x is equal to 0, v is equal to 0, so minimize at your 0. Okay, x is equal to 0, you will get the minima and parabolic sum. Eta hame jani chhe. This is for a linear harmonic case. We are more familiar. Okay, this is the one thing we are doing everywhere. Now, if you go to a n harmonic oscillator, mo jab gote n harmonic oscillator kale. N harmonic oscillator mane kon korche na now actually minus alpha x cube. A gote term ta add hala. Etiki term ta f is equal to minus kx. This term is actually your linear term. Now I have added one term where alpha is a constant and x cube power टाको मु बढ़े दे okay power टा बढ़ी गला ताहले एटा होचे तमरा इन तमरा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर and ए जेहेतु ए power टा बढ़िला then it is definitely a non-linear term x cube it's a non-linear term okay it's a non-linear equation so in this case if you calculate the potential it looks more non-linear x to the power 4 and x square is there so half kx square plus your alpha by 4 x to the power 4 if you integrate the similar way the way we did in the earlier so if you take in this case okay if you take in a n harmonic oscillator because there are two parameters over here okay there are two constant parameters in this case you can take this k is equal to -1 because it's a n harmonic okay that's the reason you can take it k is equal to -1 it's not a harmonic okay and alpha is equal to 1 another constant any two parameters so then if you plot this equation fx versus x it looks bit non-linear kintu etek non-linear bhi nahi okay but there is a it's not like a linear function agar jab tum linear ye karte some non-linearity is there in the course if you plot again your vx okay you will get this kind of term okay again at x is equal to 0 you will get vx is equal to 0 because x square and x fourth is there that's the reason actually you get in this expression actually you get two minima
हला ए इक्वेशन को जब सॉल्व करियो बोले कोन हो यू विल गेट 2 मिनिमम ओके बिकॉज़ ऑफ दिस पावर ओके x स्क्वायर जब कॉमन नै जिवो गुटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसीबो तार तो दुईटा सॉल्यूशन आसीबो दैट्स द रीजन यू गेट 2 minima at -1 and +1 okay so I would suggest each and every person in the class they should plot this graph and send to my email so that I can have a feel that you learn something okay मु जति की ग्राफ देखो छी सब जाको प्लॉट करके आसीबो specifically you send to my email so that I can have a feel that you are learning something at home through your computer. Okay, if you cannot plot, you ask me. Okay, and there are different plotting software are there. One is your GLU plot, another is your Scilab. Whatever you feel comfortable, you plot it and send to me. Okay. Now we'll go to the next slide. So these are some of the example of your linear differential equation. ना एक केस रे देखो एटा किछि तमरा linear differential equation काहे कि एगुडा को linear differential equation को जाउ छै ना जे कोनोसी जगह if you look for the power of the x okay x रो power को देखो nowhere it is x square or x cube or x square everywhere it's like x okay it is t square अछि t we are not taking it okay we are taking the x variable okay because x is the variable which is changing with the time but time is a running index so if it is t square is there then you cannot take it as a nonlinear we are looking the x change of the x variable jodi eta x square heitanta tale eta heitanta nonlinear but no t square is there that's the reason is a linear equation similarly over here this term this cos term where it depends on the x it depends on the frequency, its own frequency and t. Okay, that's the reason. It is again it's called like a your linear equation. Similarly, other things. This kind of question sometimes asked in your basic question your net or net ask कितना question आता है ना किसी को पता है which are the non-linear and linear equations. So you can figure it out. जोठी तमरा x रो power if x is a dynamical variable because everywhere you see x is changing with time. Or y is changing with time, or if it is a three-dimensional r is changing with time. If that variable power is only one, then you can say that that's like a linear equation. Okay, so I don't think so. It will be difficult for you to identify. Okay, but remember this: जो variable that now is a dynamical value, that power is always one. Then that is a linear equation. So if you take a nonlinear, then you see here x cube is there. And x is there. This brings the non-linearity. Similarly, here x cube is there. It brings the non-linearity. Okay, here actually you see dx by dt the whole square. Okay, dx by dt the whole square. This gives the non-linearity. Okay. Similarly, here you see x sin x is there. It gives the extra non-linearity. E to the power minus x. It gives the extra non-linearity. Okay, similarly here x to the power, total to the power, this equation if you look to the power of half is there, whole to the power of half, that's the reason it gives the nonlinearity. Here r by r cube, this gives the nonlinearity, sorry. Okay, similarly x to the power, if you do a expansion of these terms, 1 divided by your b plus x, if you do a expansion, a expression को तुम्हें expansion करते हैं, you will get the nonlinearity term. Similarly, here you see minus xy is written over here. एटा तुम्हारा nonlinearity होची. एला first identify करिबा होची ए x सहित y रो जदी connection होची, they are not independent. खाली एटी मु plus y करथांते, that is not directly proportional to your nonlinearity. x and y x y से तो लिखा है x into y x रो पावर होची 1 y रो पावर होची 1 total variable power होची 2 that's the reason it's like a nonlinear term. Similarly here this is a nonlinear term. Okay, similarly x square y this is a nonlinear term. Here now sigma into y minus x ला देखो a equation को देखो but if you go to the next equation x z is sitting एटा होची तीनटा equation missing. This three equation gives rise to nonlinearity. So x, this term xz, it gives nonlinearity. Because na x को z सहित couple करूचे. Again in the last equation, x is coupled with y. Okay, any kind of your coupled equation is a nonlinear equation because that
whole power it gives rise to your 2 hala x ର power 1 y ର power is 1 that's the reason actually they are the non-linear or any kind of eta ko generally एमिति कहନ୍ତି eta hoche coupled set of differential equation if you take the coupled set of differential equation they are in non-linear in nature किंतु हमें टेस्ट करबा को पड़िबो जे whether by looking at it you can say this is a non-linear because this will not either superposition principle or homogeneity principle it will not obey at all okay now so what is the criterion to become a non-linear okay जदि गोटे सिस्टम तमर जदि non-linear हेतिबो that system actually you have to do a stability analysis ना stability analysis माने कोन ना मु जो solution point जोटा पाइबी whether that point is stable or it is a unstable point माने से point ता forever मु जदि मानरा गोटे कोन गोटे potential well टे जदि create करिबी if the point will be at the minima it is tomorrow one of the solution la or if you take a graph of this okay a jo graph dekha eta kona this point is one solution and this point is another solution and x axis re joti tomara 0 re cut karuchi so they are the solution so whether this solution is unstable or stable eta dekhla they are like a unstable a point or a point to dekho se mane unstable kintu ei case re dekho ये जो one dimensional harmonic oscillator case रे देखो wherever the zero is there the Vx is minimum okay but here it is not wherever x axis को cut करूची that time here it is not minimum जदि a point एटी को shift हेतंता ताले that will be the minimum okay ताले a system का तुम्हारा कौन stable system हेतंता but this is a unstable system because the solution are there unstable either they will fall to this way or they will move away from this okay this is not a stable system so here tome gote system come back re jodi achi then how do you test the system is stable or not this is very very important okay to understand the nonlinearity if you understand this then only you can understand the nonlinearity otherwise you will not okay any kind of dynamical system here actually two dimensional dynamical system nete kai kina two dimension this function actually depends on your x and y and there are two variables x dot and y dot and this dot is actually is related to a derivative and this p and q they are the well defined function okay ताले एटा होची कोन ओटे टू डायमेंशनल सिस्टम तार ओटे जो स्टेबल पॉइंट जदि थिबो से पॉइंट को हमें लेट्स कंसीडर x0 y0 हला we think at the x0 y0 is a point okay where the solution exists ताले से केस रे कोन हो your derivative जो पॉइंट रे तमरा सॉल्यूशन exists से पॉइंट रे तमरा x dot is equal to 0 and y dot is equal to 0 remember this okay stability analysis kala hale tame always you have to take it at the stable fixed point la stable point re x dot is 0 y dot is 0 jodi x dot is 0 tale pxy is equal to 0 and qxy is in 0 but that time your xy is equal to your x0 y0 that's the reason p of x0 y0 q of x0 y0 is equal to 0 jo point re puchina parcho you can interrupt me and ask me the question okay hala so there is no writing facility over here but you can ask me the question if you don't understand x dot y dot jodi 0 hebo tahala sei point house tomara fixed point taku kon ke fix it point seta hoche fixed point that is one of the solution okay now set a stability unstable if you want to check it okay so that fixed point actually you take it as a different notation your x0 y0 and say point jodi mo evaluate karibi because x dot is 0 so p x0 y0 is equal to 0 and q x0 y0 is equal to 0 okay then what you have to do in order to test the stability mu tapare check karibi je e point stable na unstable taile mu kon kariya padibo mote tike perturb kariya padibo I have to perturb this system okay if I perturb this system from the equilibrium which is written over here so infinitely small perturbation you have to do okay then perturbation mane kona x को टिके disturbance कर दो y को टिके disturbance कर दो from the equilibrium point so x is equal to x0 zeta t and y is equal to y0 eta t okay ताल a zeta and eta is very very small quantity it should be very, very less than 1 you can take 0.001 or something like that okay very small quantity
kahi ki na it is small quantity emti jodi small quantity na bo zeta and eta if it is very very small you can do a Taylor series expansion tahale you can do Taylor series expansion f of x plus h you can expand it when h is very very small hala tahale jodi x ta ko टिके पटरप कर देला y टा को टिके पटरप कर देला tahale pxy I can write it p of x0 plus zeta y0 plus zeta. So if you do a Taylor series expansion of this term, so p of x0 y0 eta hoji tomar fixed point a jo higher order term guda ko tomar first derivative asigala okay dp by dx x0 y0 with respect to your zeta dp by dy x0 y0 and another is your eta okay these are the first order term and then you can write it the second order term. Similarly qxy you can write expansion up to the first order term. Second order term is not that important. Okay, first order term only you can tell about it. Okay, so dp by jo tomaro ita rahila tomaro del p by del x, del p by del y, del q by del x, del q by del y. Okay, a term ko you represent is as your a, b, c and d. Emiti tome taku represent. Tahale one can write this equation. Hala, now one can write this equation as your x ta kon x hoji tomaro x0 plus zeta t x dot jete mile mu nebi hala kahi na a expression dekhna x dot lekha hai semti y dot lekha hai jete bele mu x dot ta nebi x0 dot and this is your zeta dot t kintu a term ta kon this is a fixed term eta hoji constant term a constant term ro derivative hoji 0 jete bele mu zeta o eta form re lekhibi so what you can write it is x dot equal to your x0 dot plus zeta dot t okay x0 dot equal to 0 that's the reason x dot equal to zeta dot t that's the reason I can write it as zeta dot okay tapore a point hoji kona p of x0 y0 they are the fixed point so kichi time with respect to time they will never change they are like a fixed okay left hand side mo x dot pai lekhili right hand side I have to write in terms of your p of xy tahale a term ta hochi fixed point p of x0 y0 is a fixed point so this doesn't depend on the time this is like a constant only the term which are depending on the time approximation now actually this guy these two equations zeta dot and eta dot it will tells about the stability of the that point x0 y0 so now what you do this equation a equation jota achi hala a equation do tame kon karibo na zeta double dot you find it okay differentiating this equation 3.8a with respect to 2 and tame setu eta dependence ta ko kadi so you take these two equation you find out the zeta double dot hele kon hobo zeta double dot is equal to a zeta dot plus b eta dot so eta dot eta dot you can get it from here okay eta dot equal to your b into c zeta plus your d eta tapore tomar gote term hoila d eta you can evaluate from your this expression eta is equal to zeta dot minus a zeta whole divided by your b okay setu tome eliminate kar dobo kono eliminate kar dobo eta ko se dita equation ko take just doing mathematics then you will get a second order differential equation tahale a equation ro jota tomar characteristic equation there is a standard method to solve this equation so then you can take it that this zeta t is the solution equal to your a into exponential minus of lambda t and b into exponential. So if you put this zeta t over in equation 3.9 it is one of the solution this is a standard solution we have seen in your mathematics books okay then what will happen this lambda 1 and lambda 2 eguda ko sabu kono na this is actually this is the quadratic equation solution right so this lambda 1 and lambda 2 is the quadratic equation solution which are the your eigenvalue basically hala its eigenvalue provided your ad minus bc this term is not equal to 0 so a and b are in general complex integration constant and note that in general the eigenvalue can be
a complex quantity. जो lambda 1 and lambda 2 बाहर होती it's like a complex quantity. कहीं ना जो square root term होती so they are like a complex quantity. Again, if you substitute this 3.10 a zeta t, okay, into 3.81 a expression जब तुम ये करिबो ताले zeta dot रो ଗୋଟେ equation आसीबो. Zeta dot equation को again if you solve it you will get like this one c into exponential of lambda t and d into exponential lambda t. ଆଉ ସେ c ର substitution ହେଇଛି ଏଇଟା a into lambda 1 minus a divided by b and d equal to b into lambda 2 minus a divided by b. ओके एतिकी तमरा होची आइगन वैल्यू एनालिसिस यो ताहले देखो ए एक्सप्रेशन रे तुम देखि करतो ए भलिया टर्म टा गुडा को तुम क्लासिकल मैकेनिक्स हो कि डिफरेंट जो मैथमेटिक्स टर्म रे ए भलिया टर्म तुम सब देखछ दिस इज नथिंग बट योर जैकोबियन काइंड ऑफ थिंग ओके जैकोबियन रो तो आइगन वैल्यू गुडा को तुम फाइंड करो स्टेबिलिटी बाय सो यू विल गेट योर जीटा टी पाई गेला ईटा टी पाई गेला एंड सी पाई गेला सो ई जो मैट्रिक्स टा अछि हला the zeta dot equation or eta dot equation they are in terms of your a b and c d a जो matrix sorry ये देख लो a b and c d zeta dot and eta that you can take it as a matrix and that matrix eigen value and determinant of m should not be equal to 0 यदि तुम्हारा 0 हो गया पहले सॉल्यूशन का 5 होगा मुझे लगना so the a lambda 1 and lambda 2 immediately you can see they are the eigen value of that expression okay जदि तमर जो आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 ला लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 होची एटा होची कॉम्प्लेक्स बुझे छै ने तार जदि रियल पार्ट जदि बाहरिला रियल पार्ट ऑफ द बोथ द आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव जदि पाई लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 रो आइगन वैल्यू जदि तुम नेगेटिव पाइलो ताहले यू विल बी सी ए स्टेबल पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट x0 y0 यू टेक इट एज योर x0 y0 ए पॉइंट आइला तमर गोटे स्टेबल फिक्स पॉइंट ताले तमर जो ट्रेजेक्टरी गुडा का कोन स्टेबल फिक्स पॉइंट दे विल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेबल फिक्स पॉइंट से माने समस्त आसी कि एठी दे विल गेट सी हला कुछ कर छै सो जदी तमर सेटा जो स्टेबल फिक्स पॉइंट हेतिबो जेंति लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर केस ले 0 पॉइंट को सब जगह आसी कि दे विल मिक्स अप हला तुम जेते डिस्टर्ब करले भी से जदी स्टेबल फिक्स पॉइंट आइते से स्टेबल फिक्स पॉइंट को सब रिटर्न करियो ओके if real part is actually your two of the eigen value is the positive है real part of even one of the two eigen value is positive हला जदी गोटे कर भी जदी real part जदी positive हे जाउची ताहेले से पॉइंट से माने रही बेनी से पॉइंट रो दे विल मूव आउट हला this is one of the your trajectory plot that from the fixed point टिके disturbance कर दलो they will move away okay that is called your unstable point सेमिति तमरा जदि रियल पार्ट रा माने बोथ द केसेस जदि 0 हेतिबो ताहेले से पॉइंट टोटली मूव करिवनी बुझिला जैसे न्यूट्रल पॉइंट तमे जते डिस्टर्ब करले भी किछ हेबा नै सेटा दैट्स लाइक ए न्यूट्रल पॉइंट इट्स ऑलवेज स्टेबल फॉर ओके मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट दिस अनस्टेबल एंड स्टेबल ओके ताहेले नेक्स्ट होची क्वेश्चन होची जे गोटे जगह रे स्टेबल भी थिबो अनस्टेबल भी थिबो बुझि पाछे ना ताहेले सिस्टम ता कोन बुझिला स्टेबल है अनस्टेबल है कौन होची ना सिस्टम रो मूव आवे हे जाउची स्टेबल है कौन होची ना सिस्टम आडको से आसुची इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसुची हला अनस्टेबल है तो से अनस्टेबल हे गेला हम तक प्रेडिक्ट करबे स्टेबल है कौन होची ना गोटे पार्ट को आसी गेला मु आई विल गेट स्टेबल पॉइंट किंतु आउट जो सिस्टम थिबो जोठी तमरो लेट्स से देयर आर मेनी फिक्स्ड पॉइंट गोटे सिस्टम रे कौन होची ना तमरो नॉन लीनियर इक्वेशन जदी तमे चिंता करूछ नॉन लीनियर इक्वेशन हले तमरो एटलीस्ट द पावर इज इक्वल टू योर x स्क्वायर अछि x स्क्वायर हले दीटा सॉल्यूशन रहि बसे ओके काइना 2 पावर अछि दीटा सॉल्यूशन रहि दीटा सॉल्यूशन हले दीटा फिक्स्ड पॉइंट ओके इन दैट टू फिक्स्ड पॉइंट हला वन मे बी स्टेबल अनदर मे बी अनस्टेबल तीनटा जदी रहइबो 2 मे बी स्टेबल वन मे बी अनस्टेबल चारिटा जदी रहइबो फिक्स्ड पॉइंट the four point may not be stable 3 point may be stable another point is not stable empty situation भी ऐसे करे बुझ पाछे so the question होची जे जो stable unstable रो combination जदी रहइबो गोटे सिस्टम रे if there is a combination between your stable and unstable system then what will happen okay the system is still bounded or the system is still unstable माने से flow हे जवा move away from me okay हम किछ प्रेडिक्शन कर परिया the interesting part is if there are more number of fixed point then there is a generation of the chaos
बुझला ना chaos सेठी तमे पाई पर जदी गुडा फिक्स पॉइंट so it is the back to your definition जदी x रो पावर जदी अधिक आइतो स्क्वायर क्यूब तमरो x to the 4 x to the 5 ए ओलिया जदी पावर थियो बोले से नॉन लिनियरिटी बेसी रहइबो नॉन लिनियरिटी बेसी रहिले तमरो सेठी स्टेबल अनस्टेबल you know fixed point you will get and if there are stable unstable fixed point is there then गोटे जगह से बाहर को बाहरिया को चाहतो बोले आ गोटे डायरेक्शन ताको पुल करतो स्टेबल पॉइंट कोन करतो ताको पुल करतो अनस्टेबल पॉइंट ताको बाहर को ठेलुतो okay so what will happen in one direction they want to move away in another direction they want to enter into the system okay so it's some kind of a stretching and folding stretch heba ko jauto puni taku fold karto for example one of the example I can give you suppose you are making your chapati or roti ना तमे जते ताको कोन माने ये करूतबो राउंड टे करी कि छोट चपाती रे तयारी करतो तापर कोन करबो ताको जति तमे चक्की रे जति ये करबो ताले कोन हो से that will get stretch ओके बहुत स्ट्रेच हे गेला परे कोन करते अगेन ताको जदी जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस इज देयर यू नो पेट्री डिशेस आर देयर इफ दे वांट टू मेक इट ताले कोन ताको पूरी तरह फोल्ड कर देते पूरी ताको ये करते हला जो व्हाट इज कॉल्ड सम काइंड ऑफ रोटी इफ यू हैव सीन दैट जो लेयर बाय लेयर बाहर हला गोटे लेयर खाइ सरियो तापर आ गोटे लेयर बाहर ए बले ओके इवन तमरो यू नो इन जगन्नाथ टेंपल यू विल गेट दैट काइंड ऑफ फूड्स जोटा को तमे you know layer by set गुडा केमति तयारी करन थोड़े ताको स्ट्रेच कर देंती again they will make it fold again they will stretch it again they will make it fold like that okay so गोटे डायरेक्शन बा फोर्स का देलो से स्ट्रेच हे गेला ओके तापर कोन आउ थोड़े ताको फोर्सफुली ताको बेंड कर देला ओके स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ई मेकानिज्म कोन ताहले ए ओलिया सिस्टम मान करे नॉन लिनियर सिस्टम आसी सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल यार माने न हो जे रोटी रे नॉन लिनियर सिस्टम ओके I am just giving one of the example of stretching and bending गोटे आडे टाणीबो आ गोटे आडे ताको पुनी थरे ताको क्लोज करबो ओके सो नाउ सो स्टेबिलिटी एनालिसिस रे इटा होची टू यू नो वन ऑफ द क्राइटेरिया अनदर क्राइटेरिया होची जे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 प्योर इमेजिनरी हेले कोन ओके सो प्योर इमेजिनरी जदी हेबो ताले यू नो यू विल गेट ए इलेक्ट्रिकल पाथ सो वन ऑफ द होमवर्क I am giving it you take a harmonic oscillator and do the stability analysis of that point. You take harmonic oscillator equation and do the stability analysis whether you are getting lambda 1 and lambda 2, you know, if they are imaginary and complex conjugate, then only you will get the, you know, this kind of your elliptical path or a central path. Okay, so homework, write down, find out the eigenvalue of your harmonic oscillator system, whether you are getting it now. I just want to check. Again, if your lambda 1 is less than 0 and 0 is less than your lambda 2, ए बलिया सिचुएशन आसीबो ताले तमरो सैडल पॉइंट कोन देखो एपटे ए अप्रोच करि करि जाउची एपटे बाहरी जाउची एटा ए पॉइंट आउत तमरो सैडल पॉइंट एपटे अप्रोच कला एपटे बाहरला पुनी एपटे अप्रोच करची अगेन इज मूविंग अवे एपटे अप्रोच करिके अगेन इट्स मूविंग अवे ताले ए बलिया पॉइंट को कोआ जे तमरो सैडल पॉइंट ओके but there are more rigorous analysis is there people they can do it the analysis but you just remember all this 3-4 you know styles of this fixed point la ko case re center asibo ko case re central saddle point asibo ko case re tamara stable star asibo ko unstable star asibo you should at least you should know because this kind of question people they can ask in the interview okay they don't go to more complicated one the simple system they will go with harmonic oscillator debe आप पचारिबे जे why actually you are getting like a you know elliptical trajectory okay that time you have to do a stability analysis and you have to prove that lambda 1 and lambda 2 my lambda 1 and lambda 2 are they are pure and imaginary that's the reason your around the fixed point actually it's a no the trajectory looks like your elliptical path okay now then what is chaos next question I'm going to stable unstable non-linearity we will discuss okay then next point is chaos ta kon actually chaos ta kon korche okay take a simple equation x is equal to r cos t y is equal to r sin t you plot it x versus y mu joda कहउतले तुमको फेस स्पेस रे प्लॉट करो बोली कहउतले फेस स्पेस रे प्लॉट कले कोन होबा x is equal to r cos t y is equal to r एटा तुमरो सर्कल रो इक्वेशन बता okay ए फेस स्पेस रे जते प्लॉट करियो you will get some idea what is happening to that system jodi gote system jodi chaos heitibo one thing you will get it
note down this point. Sensitive to initial condition. This is the most important condition in case of your chaotic system. Okay, bujhela? So what does it mean sensitive to initial condition? Two orbits very close to each other. Initially they are very close to each other, but finally they will diverge like exponential, diverge like anything. If two trajectory, if they are close to each other, and if you evolve with time, after some time what will happen is that they will diverge. Okay. Another thing you have to test is the global solution must be bounded. What a system the bounded ହେଇଥିବା ଦରକାର. That means there must be a stretching and folding होଥିବା ଦରକାର. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ condition ହେଉଛି self similarity. Self similarity ଥିବା ଦରକାର. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ condition ହେଉଛି ଯେ Lyapunov of exponent ଟା ତମର you are able to determine the Lyapunov of exponent. This is one of the mathematical things that exponent you have to determine. I will discuss in detail. Okay. And Lyapunov exponent जदि तुम से system रे पाइबो ताहेले is sensitive to initial condition टा explain करते हैं. Okay. So far any question? अरे कोटी बुझी न होची पचारे मते. Are you able to hear me? Yes sir, yes sir. हाँ, जोटी बुझी न होची मते immediately पचारे question so that I will be active. Okay. ना कहीं ना एट के एडवांस टॉपिक गुडा का किंतु बहुत इजी टॉपिक जे थरे धर देला वाला ताको बहुत इजी है. ओके. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर दिस सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन. मो सेटा म तुमको कहि दे. स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग भी कहि देबी. Similar self similarity भी कहि भी. One of the example I'll give it. And Lyapunov exponent is the one of the important quantity. जो जी इंटरव्यू को जीवो, how do you test the chaos? ताले से माने पचरे Lyapunov exponent को से माने आसे. If you get one of the exponent it's positive, ताले से system टा is a chaotic system. Okay, we will go point by point. देखो sensitive to initial condition माने कौन? Sensitive to initial condition को measure करिया कहले Lyapunov exponent टा दरकार. Okay, now you look at it, this picture. Okay, ला जो पॉइंट रे तुमको स्लाइड रे देखा जानो थिबो कि डिस्कनेक्ट हे जो मते इमीडिएटली कहबो बाय फोन और समथिंग लाइक दैट. ओके. सो t is equal to 0 रे दीटा ट्रैजेक्टरी they are very close to each other. देखा जानो गोटे सिंगल लाइन होलिया देखा जाय. ओके. They move together after some time. This is just a schematic diagram. Okay. They move together, and after some time what is happening that a point टा पूरा diverge हो गला. So if you take this final destination of this point and this point some particular time पे माने t is equal to let's say 30 minutes or something like that. माने एमिति diverge हो गले जे तांका भितर आउ किछ relationship ही रहला. Okay. Initially the distance is almost 0. Let's say 10 to the minus 7 or 10 to the minus 8. But finally what will happen? They diverge like anything. So eta ko jodi mu tike zoom kori kina jodi explain karibi divergence plot ta initially let's say the difference between the two trajectories your delta x0 I. Okay, after certain time actually delta xit he gala e jo e jo divergence ta. Okay, eta magnify kari ke dekhai tahale या भितरे delta xi0 और delta xit भितरे relationship ta joda asu. Okay, actually this is not a linear, like an exponential divergence. So in principle like we can write it delta xit into delta xit equal to delta xi0 or 0i e to the power some kind of your lambda it. जेतिकी तमरो डाइवर्ज करूची से डाइवर्जेंस होची एटा होची तमरो Lyapunov exponent e to the power of lambda it. एटा को कहंती Lyapunov exponent. जदि तमरो ए lambda टा होची greater than 0 असला, ओके, ए पॉजिटिव क्वांटिटी यू गेट इट. ता माने कोन ए xit टा x02 पूरा एक्सपोनेंशियली डाइवर्ज करि जाउची. आ एमितिया सिस्टम रे जदि एक्सपोनेंशियली डाइवर्ज करि जाउची ताले तमे जानिबो जे दैट सिस्टम मे बी chaotic. से सिस्टम रो चांस होची द सिस्टम इज बिकम chaotic. एटा गोटे मॉडल रो कंप्यूटर सिमुलेशन कराई छि. देयर आर टू कर्व्स. ओके, वन इज योर रेड अनदर इज योर टू ट्रैजेक्टरी. कर्व तो नो एटा होची ट्रैजेक्टरी यू कैन टेल. ओके, x axis द योर टाइम एक्सिस
and this is x variable and y variable. Okay. Initially, they are very close to each other. You cannot distinguish. But finally, after a 600 unit of time, see, around 400 unit of time, actually, they separate. They are getting separated. Okay, 600 time, they are much more separated. Air value around -10 or tar value plus 10. Okay, 800 time unit or 1,000 unit time, some kind of your unpredictability is happening. Sensitive to initial condition. Initial condition are very close. After some time, they diverge like anything. Okay, so एमितिया जदि सिचुएशन टे देखुछ गोटे सिस्टम रे x वर्सेस y को जदि प्लॉट करिवो कि y वर्सेस z को प्लॉट करिवो कि z वर्सेस तमरा x को प्लॉट करिवो एमितिया जदि होउचे तमे जानिबो जे द सिस्टम इज सेंसिटिव टू द इनिशियल कंडीशन. ओके, वन ऑफ द फिजिकल एग्जांपल तुमको देई पारिबी जोटा कि you can see. ओके, at home or something like smoke bahari wata देखिथिबो माने कर स्मोक गुटे छोटो कोणारे जदि बाहर स्मोक टा हला इनिशियली से माने क्लोज हे कि बाहरंती किंतु जते बेले स्मोक टा कोन आफ्टर सम टाइम कोन सेटा पूरा स्प्रेड हे जाय दैट गेट स्प्रेड हला सो दैट इज लाइक योर sensitive to initial condition. For example, तमा गुटे सिगरेट टिप जते स्मोक बाहर it like a line बुझे लागले गोटे लाइन रे बाहर बुझेला आफ्टर सम टाइम कोन हो स्मोक गुडा का दे विल गेट डाइवर्ज इच अदर. ओके, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन. सो से जो स्मोक सिस्टम ता जोडा अछि हमर जो क्लाउड सिस्टम में तुम देखियो दे आर आल्सो लाइक सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन. ओके, क्लाउड सिस्टम हला तमरो टर्बुलेंस सिस्टम हला they are also like a sensitive to initial condition. They will get diverged hla dita jodi line nahi thiba they will get diverged. And that divergence can be expressed by this relation delta xit equal to your delta x0 e to the power lambda t, and if you take the logarithm immediately you can see the Lyapunov exponent. Eta jetiki large hebo setiki tomaro stretching hebo positive hebo eta lekha hai Lyapunov exponent positive hele stretching hebo a jodi negative hela Lyapunov exponent mane kono eta close हे हला काई ना एक्सपोनेंशियल टर्म ता छोटो हे गला वाला एटा एति की क्लोज हे तो स्ट्रेचिंग हे गला माने बंद हे जाउछे बुझे सॉरी कोन कंट्रैक्शन हे जाउछे. सो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैजेक्टरी दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. तो नेगेटिव हेले तमरो कंट्रैक्शन, पॉजिटिव हेले तमरो होची स्ट्रेचिंग आ जीरो जदी रहिला माने दुटा ट्रैजेक्टरी फॉरएवर दे आर द सेम डिस्टेंस. एठी मेजर करे डेल्टा x0 आई तापर नेक्स्ट टाइम रे मेजर करले भी सेतिकी नेक्स्ट टाइम रे मेजर करले भी सेतिकी ताले ता हेटा होती तमरा जीरो एक्सपोनेंट. सो टाके तुमकी टेंजेंशियल डायरेक्शन देखियो तुमको किछि चेंज देखाबो. इन क्लास आल्सो आई हैव गिवन वन एग्जांपल गोटे स्फीयर जदी बहुत स्पीड रे मूव करूची हला ताकू जदी देखिबो बोले तमे सेटा इलिप्स ओलिया देखा. ओके, 3D सिनेमा मंगरे देखिबो गोटे स्फेरिकल शेप जदी जोर से मूव करबो बोले लाइक ए स्फीयर इट मूव्स लाइक ए एलिप्स हला एलिप्स ओलिया देखा जाए काहे कि तुम डिफरेंट डायरेक्शन रे देखियो बोले सेटा तुमको एलिप्स ओलिया देखा जाए. बट इफ यू लुक एट द टेंजेंशियल डायरेक्शन you will not see any change. Okay, because the trajectory doesn't change over there. Lyapunov exponent is your zero. Now look at some of the example. Okay, eta hochi tomara park, eta hochi broccoli to tum सब देखिथिबो माने गां मन पर भी सब होची और cauliflower if you take it हला ए cauliflower की broccoli रो if you take a particular गोटे कढीटे सेठ काढी and you compare with your bigger one हला गोटे कढीटे काढी के ताको कंपेयर करियो तमरो bigger one देखिबो तार शेप एंड एयर शेप दे आर मच मोर सिमिलर हला जो बड़ा cauliflower आउटे तमरो से cauliflower गोटे छोटो पीस टे करबो काना से पीस हेकना आसे जो माने घर तयारी कला बेले से गोटे चिप्स काढंते गोटे पार्ट हेकना आसे. That part has a similarity. You can do that experiment also. If you go to the market, you bring a broccoli, and if you bring it and you take a simple this part, ला ए छोटिया पार्ट टे नहीं किना ताको देखियो बा ए बलिया जिनिस देखियो ता भीतर सब जाक सिमिलरिटी था हला सिमिलरिटी एटा भी कहंती सेल्फ सिमिलरिटी माने जते छोटो छोटो करी भी देखिबी हाउ मच स्मॉल आई विल टेक इट दे रिजेंबल्स टू द बिगर पीस. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू योर सी एरिया हला तमे वेव्स गुडा को देखिथिबो द सेम काइंड ऑफ वेव्स यू विल सी इन डिफरेंट रीजन. ओके, सिमिलरली योर ट्रीज ए जो सुखला ए गछ गुडा को देखा
Similarly in ice pack cloud रे भी देखिथिबो सब देखो the same kind of shape हला गोटे बड़ fish को तमे mark it, then what you do is look for a small fish and look at the similarity of it सेही भीतर ही काढिबो अलगा जगह रो न from that place you concentrate on a single piece and you check the similarity. If there is a similarity, then that is like a self similarity pattern. एटा होची Sierpinski triangle होची गोटे computer generated self similarity graph. एटीर जे कोनोसी गोटे तमे पार्ट को जदि नबो जे कोनोसी एटा को जदि नबो ए छोटिया पीस टा को नबो आ बडो सहित देखियो ले दे आर रिजेम्बल्स. ओके तांको भितरे सिमिलारिटी अछि या को कोनती तमरो सेल्फ सिमिलारिटी हला सेल्फ सिमिलारिटी जो ओलिया जिनिस माने थाए तार आउट ना होची तमरो फ्रैक्टल ओली कोन. ओके रिमेंबर दिस राइट डाउन इट इट्स ए फ्रैक्टल नेचर माने सेल्फ सिमिलारिटी जोठी तमरो सेल्फ सिमिलारिटी रहइबो सेठी तमरो फ्रैक्टल ओली गोटे ना ते सुनितो फिजिक्स टर्म पे इज कॉल्ड ए फ्रैक्टल माने कोन ना इज ए फ्रैक्शनल डायमेंशन हला फ्रैक्शनल डायमेंशन माने कोन आई विल कम टू दैट तमे आगरो कोन सब पढि छ 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन एमती सब पढि आइछ. ओके बट इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम ओके ए सिस्टम माने करे सेटा नाही ए केस रे डायमेंशन इज 2.5 you will get dimension 1.5 you will get dimension 3.5 you will get dimension 4.5 एमती डायमेंशन गुडा को पाइ. Okay, so dimension is not a whole number. Class. Okay. So dimension is not a whole number. Now it's a fraction. Okay, that is called your fractal dimension. जो system माने करे self similarity थिबा तार dimension जेते बेले तुम काढिबो they will be like a fractal dimension. You will get 2.5, 4.5, 3.5 like that. Okay, and there is a mathematical way to determine that. Hala? So it's very interesting. Okay, now see, now you come to seta ita hochi sabu jaga dekhila jinis hoda observable things. Now you come to the a simple thing is called your Henon attractor. Henon attractor hochi gote 2 dimensional map. Hala? Discrete vector. So you write down the equation x of t plus 1 equal to 1 minus ax t whole square ax t square yt and yt plus 1 dxt. I will suggest each and every person they should simulate this equation. A equation को solve करा for the value of a is equal to 1.4, b is equal to 0.3 and send to my email. Then okay, मुझे लगा समस्त solve करेंगे मो email को पठेगा and I can tell you the computer code also available in the internet also. Okay, mo question होची जे तमे जो टू कॉपी करो जहा भी करो at least you see you should have some kind of feel what I have taught today. Okay, so and then only you can you will feel yourself confident for your research. MSc is not just for learn something and get some mark and after that be silent. No, you should not do that. So you should be doing something after your MSc course. No doubt you have to get a good mark. That is not a big question. But the question is that mo ए सब सिखला परे कोन करिवि सेटा होचे तमर मेन एम होचे रिसर्च. Okay, so this is the thing, that's the reason I am telling you do all this homework. Okay, जति के पढाई थला सेउडा का माने that is different and this topic is a bit different. एटा होचे टिके research related so that you will get motivated towards the research. Research रे कोनटा होची जे सेउडा. Okay, take a initiative. Okay, and search in Google or something, you will get the computer code. This is well established, attractor, all this. Understand the computer code and run in your computer and generate this plot. Okay, एमिति भी कोड अछि इंटरनेट रे जे इमीडिएटली ए सब दे देबो. Okay, किंतु मो क्वेश्चन अछि तमे ताको कोन डिटेल एनालिसिस कर. So you take a value of a is equal to 1.4, b is equal to 0.3 and solve this equation. It discuss system. ताकू जेते बेले मु फेस देखो एठी सब जगह रे कोन करछि प्लॉट पूरा को x वर्सेस y कि y वर्सेस x जहा भी प्लॉट करछि तमे you also you can plot it x as a function of t, y as a function of t. Okay, there is no problem. ताहले तमर कोन होछि ना गोटे x versus y का प्लॉट कले एटा होछि फेज प्लॉट. एटा काउंट दिस इज कॉल्ड योर फेज प्लॉट. You see some kind of shape, nice shape is coming. Some kind of your shape is coming.
ହେଲା एटा सेति पाई ए जो सेट गुडा एटा होची बाउंडेड सिस्टम सेति पाई कोन एतिकी भितरे ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओके इट नेवर फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम ओके इट्स लाइक ए अट्रैक्टर बुझे लागले सेति पाई एटा को आजे हेनन अट्रैक्टर तापरे मु कोन करबी तापरे ए जो एथु गुटे छोटो रिजल्ट मु लेबी ताको मु जूम करली जोटा कि एटा तमे देखुछ बी कहता सेतिरे मु चारिटा लाइन पाइबी एमटी ओके बुझे लागले एठी देखो ए पार्ट को जूम करले एमटी लाइन मु पाइबी 1 2 3 एमटी गुडाई लाइन पाइबी ओके पुनी ए छोटो पार्ट को जूम करी गले एतिकी लाइन पाइबे पुनी ए पार्ट को जूम करी गले डी सो ए रो जूमिंग पार्ट होची बी रो जूमिंग पार्ट होची सी रो जूमिंग पार्ट होची डी व्हाट यू सी ओवर हियर is what is the difference between the C and D graph? A bit of difference is there is similarity. You know, you see the similarity. Okay, so self similarity can be tested like this. A C or D with similarity jehetu achi, B or C with similarity achi. Okay, any part you zoom it, they look like same. B soita C ra, C soita D ra, they are all they looks very same. Okay, so this is a chaotic attractor. Diagonal exponent you will get one positive. And another is your zero and the self similarity behavior एतिकी तमे जदी देखो एटा खाली इक्वेशन ता सॉल्व कर देला तमे किछ गोटे आईडिया पाइ जाउछो से आईडिया रे तमे chaotic analysis you can do it and self similarity nature you can find it over here okay so it's a two dimensional discrete map two dimension kind को जाउछि x and y dimension अछि से two dimension and it's a discrete equation x of t plus 1 form में लिखा है we have not written like here x dot or y dot dx by dt की dy by dt में लिखिन हम लिखि परिबो किछ असुविधा है but it generally it written in this form it's a discrete map because they called it a discrete map discrete form रे लिखा है okay now stretching and folding उटे तमरा क्वेश्चन आसतला जोटा एटा होचे तमरा देख एटा को मु कोन कली बेलना चक्र बेल देली पुणी ता कोन कली यू नो पुणी ता फोल्ड कली हला ए दो तयारी करी फ्लैटनिंग स्टेज एंड फोल्ड but से भले गोटे सिस्टम अछि तमरा कोटा कहलो एटा होचे ड्राइवन पेंडुलम ओके डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन ए इक्वेशन रे मु तम गोटे देखौ छी प्रोबेबली यू विल सी इट ओवर हियर एनिमेशन ओके स्लाइड okay so somewhere it is there देखला so it's stretching in one direction तापर पुनी folding है it has this is that simple equation x double prime is equal to your 0.05 x prime sin x so my suggestion is that this also the codes are also available in the internet and you can simulate this equation this is a second order differential equation remember it x double prime 0.05x prime plus sin x equal to 0.6 sin 0.70 if you solve it you know some kind of stretching is happening again it's folding stretching and folding so a buniya system bana kare chaos asibo so one of the essential condition hochi gote tomara kono stretching and folding out of the cell similarity out of the tomara sensitive to initial condition ଆଉ sensitive to initial condition measure kariya ko hochi tomara Lyapunov exponent okay so एटा कोन कि तमरो स्ट्रेचिंग एंड फोल्डिंग वन ऑफ द एग्जांपल हला डू नहीं कि तमे यू नो the layer by layer roti exactly I don't remember now that roti is called some Romali roti or something like that okay जोटा कि साउथ इंडिया रे बेसी मिले okay ताको तमे layer के मोइडा रे दिया जनरली you know you will get different layer okay right so now you come to one of the mathematical equations जोटा कोनती logistic map okay it's a quadratic equation kaigina lambda x dx is a power is your 2 okay eta konti logistic map a logistic map re one of the parameter is called your lambda this lambda is called your this is again your one dimensional system re mu chaos dekhibi dekha a lambda ta hochi just a control parameter ଆଉ lambda ର value hochi 0 ରୁ less than equal to lambda is less than equal to 4 and x0 रो वैल्यू तमे नहीं पारिबो इन बिटवीन 0 and 1 ओके तापर मु ए इक्वेशन को सॉल्व करबी कंप्यूटर रे जते बेले तमरो लैम्बडा इज इक्वल टू 2.9 आ जो इनिशियल कंडीशन मते इक्वेशन सॉल्व करिया कोन दरकार
गोटे होची गोटे पैरामीटर दैट इज योर लैम्बडा एंड अनदर इज योर यू नो इनिशियल कंडीशन x0 हला ए दुईटा जिनिस मु जदी देबी जदी मु लैम्बडा इक्वल टू 2.19 को देबी 2.9 को देले से सब बेले कोन हबो गोटे पॉइंट को आसी कि से स्टेबल हे सो इफ यू सी दिस इक्वेशन ए इक्वेशन दा कोन सॉल्व जदी जतेले मु करबी हला लैम्बडा ऑफ xt 1 - xt = 0 0 जतेले मु करबी आइदर xt = 0 or you will get your xt = how much your 1 हला एटा दुईटा सॉल्यूशन तमरो बाहर छै ओके किंतु मु लैम्बडा जेहेतु 2.9 चूज करिछि सो आई विल गेट ए स्टेबल फिक्स पॉइंट ओवर हियर ओके अराउंड दिस पॉइंट गोटे सॉल्यूशन ही बाहर फॉर पर्टिकुलर लैम्बडा 2.9 जदि मु लैम्बडा को जदि 3.3 कर देबी टिके बढ़े दे लैम्बडा वैल्यू ओके ताहले एटा टू साइकिल कोन ना देखो इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट हला ए पॉइंट ता केते टाइम पर आछे ऊपर को थरे जाउची तापर तळ को आसले आछे दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड टू साइकिल द सेम पॉइंट विल गेट रिपीटेड आफ्टर टू स्टेप हला ए पॉइंट को मु धरिबी गोटे स्टेप गला को ऊपर गला वन स्टेप आ गोटे स्टेप रे तळ को आसला सो सेम पॉइंट आई विल गेट यू विल सी एवरीवेयर ऑल द पॉइंट्स एक्चुअली आफ्टर टू पॉइंट्स यू विल गेट द सिमिलर पॉइंट सो लैम्बडा जते 3.3 आसबो द ग्राफ विल बी लाइक इट विल ऑसिलेट्स you know in a two cycle manner la convergence to two cycle माने ए दुईटा साइकिल भीतर ही रहइबो माने दुईटा स्टेप हेले सेम पॉइंट आसीबो दुईटा स्टेप हेले सेम पॉइंट आसीबो किंतु एटा जते बेले होउची लैम्बडा इक्वल 2.9 से गोटे पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट को दिबो जो पॉइंट होउची लाइक ए अट्रैक्ट हला से पॉइंट से कुआडे मूव करिवनी इस लाइक ए अट्रैक्टिव पॉइंट हला किंतु ए केस रे कोन होउची ना टू स्टेप थरे ऊपर को जिवो पुनी तळ को आसीबो तापर पुनी लैम्बडा होउची तमरो कंट्रोलिंग पैरामीटर पुनी ताको कोन करिवे लैम्बडा को जते बेले इफ आई टेक इट 3.5 आई एम नॉट चेंजिंग द इनिशियल कंडीशन ओनली लैम्बडा इक्वल टू 3.5 जते मोनेबी यू लुक एट दिस पॉइंट ए पॉइंट रो अगेन ए पॉइंट को आसीबा पे हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक ए पॉइंट रो हेला ऊपर को थरे गला 1 देन योर 2 देन अगेन इट गोस 3 तापर तळ को आसीबा 4 ताले 4 हेले साइकिल का रिपीटेशन होछ सो दिस इज कॉल्ड योर convergence to four cycle बुझे लागले ए पॉइंट माउस को देखो ए पॉइंट रो ए पॉइंट को आसीबा पे फोर स्टेप ए पॉइंट रो ए पॉइंट आसीबा को फोर्थ स्टेप ए पॉइंट रो ए पॉइंट आसीबा को फोर्थ स्टेप सो दैट्स द रिजल्ट इट्स कॉल्ड ए फोर साइकिल हैला फोर साइकिल हेले सेम काइंड ऑफ थिंग्स आई विल गेट सो लैम्बडा by 3.5 लैम्बडा वैल्यू टा इज द कंट्रोलिंग पैरामीटर दैट वी आर इंक्रीजिंग नाउ नेक्स्ट व्हेन आई टेक लैम्बडा इक्वल टू 3.83 हैला लैम्बडा वैल्यू को आउट के बढ़े दे वर्तमान देखला ए केस रे किछि रहउछि कि साइकिल देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व इन माने बहुत बड़े साइकिल हे गला सो ए पॉइंट को आसीबा पे हेले यू नो इंटरमीडिएट साइकिल्स आर देयर बट देखो ए पॉइंट किछि ता माने जत्ते तमरो लैम्बडा वैल्यूटा पैरामीटर वैल्यूटा बढ़े जिवो सेति कि तमरो नॉन लीनियरिटी इज कमिंग इन द सॉल्यूशन ओके ट्रैजेक्टोरीटा सेति कि तमरो नॉन लीनियर हे जाउछि हला अगेन इफ यू टेक लैम्बडा इज इक्वल टू 4 आवर गोइंग मुझे लग रहा है if you take lambda is equal to 4 that time what is happening is that you know again it becomes like more non-linear so here कौन करछि let's say if you it is sensitive of initial condition ता जो तुम करछि left axis रे ए जो x0 हला आउ x0 suppose you will take 0.1 and 0.1001 right ता होछि 0.1001 so difference हला 0.0001 बुझि परछे सो जते बेले तमरो 0.1 नै के सॉल्यूशन ता बाहर करूछो आफ्टर 13 स्टेप माने 13 टाइम ऑफ यूनिट तमरो ए पॉइंट ता 80 अछि किंतु मुटी के इनिशियल कंडीशन जते बेले चेंज कर दोछि आफ्टर 13 स्टेप ए ऊपर को पळे आसे हला सो ए दुईटा कर्व को जति मु एका संगे जति प्लॉट करिवि आई विल फाइंड द डिफरेंस 13 टाइम स्टेप रे एटा ऊपर अछि एटा तळे अछि ओनली व्हाट इज द डिफरेंस लैम्बडा दुईटा समान अछि किंतु x0 ता तमरो कोन डिफरेंस होछि x0 यार भीतर डिफरेंस होछि 10 टू द पावर ऑफ -3 हला 10 टू द पावर -3 डिफरेंस बा सॉरी ना -4 0.0001 राइट सो 0.001 होछि तमरो डिफरेंस सेति के डिफरेंस रे एति के पर्यंत तमरो डिफरेंशिएशन आसला रे 13 स्टेप रे ऊपर ऊपर है एति 13 रखि माने 13 स्टेप रे उडा जल्दी डा so this is also a sensitive to initial condition hla sensitive to initial condition hale e boliya system guda ko they are moving towards the gaps
ହେଲା ନା ଦେଖ ଏଇ କେସ୍ ରେ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ सी ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଦେଖ ଏଇ କେସ୍ ରେ ୟୁ ଦେଖ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଲାମ୍ବଡା ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରେ 3 ଉପର ଗଲା ହେଲେ କେତେଟା ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି 3.2 ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ देयर आर टू सॉल्यूशन 3.4 ରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ କେତେଟା ସଲ୍ୟୁସନ 1 2 3 4 ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖିଲ वन साइकिल सॉरी एठी हला वन साइकिल एठी वन साइकिल एटा हला कोन एटा फिक्स पॉइंट गोटे सॉल्यूशन अछि एठी हला कोन टू साइकिल एठी हला 1 2 3 4 साइकिल तापर आसी कोन 8 साइकिल तापर आसी 16 साइकिल तापर आसी 32 साइकिल तापर आसी 64 साइकिल आउ जेते बेले 4 पाखा पाखी चली जाउची दैट टाइम इट इज अनप्रेडिक्टेबल तमे जो जगह रे एटा जूम करके देखियो वाले एमती बाइफर्केशन डायग्राम ता देखबे एटा कोनती बाइफर्केशन डायग्राम ए जगह रे जूम कले एटा जेमती देखा जाउची ए जगह रे जूम कले सेटा देखा जिवो ए जगह रे जूम कले सेटा देखा जिवो या भीतर भी जूम करियो वाले से बेले देखा जिवो so there are many many cycles convergent cycle you will see if you take it lambda equal to 4 so please generate this plot okay this is also available in the net you can generate solve this equation हला एति की भी जे जनरेट करिवो तार ओने भी सम प्रोजेक्ट है हला लॉजिस्टिक मैप सॉल्यूशन okay so please generate this plot and send to my email okay whatever the email is there you send to this email so period doubling is the root to chaos डबल पीरियड हो जाउची आ फाइनली पूरा अनप्रेडिक्टेबल हो जाउची चारि जते बेला आसी गला लंबा इक्वल 4 सेते बेला तमरो अनस्टेबल हो जाउची हला so the system is more aperiodic so logistic map with a one dimensional map maybe discrete map by also you can see the chaos that is one of the thing I want to mention over here now phase space रे कोन जिनिस डा कंजर्वेटिव सिस्टम हेतिबो ताले फेस स्पेस ता केबे भी चेंज हो आगरो जति कितिला सेम के देखा ओके जदि अट्रैक्टेड हेतिबो दिस आर द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जदि अट्रैक्टेड हेतिबो ताले फेस स्पेस ता कोन धीरे धीरे कमी कमी ओके फेस स्पेस वॉल्यूम सिमिलरली सेंसिटिव टू जदि इनिशियल कंडीशन हेतिबो बोले कोन फेस स्पेस वॉल्यूम ता बढ़े ओके इनिशियल छोटो थिला तापर बड़ बड़ so in terms of also face space you can study it okay ताले एमिति जदि बॉडी बॉडी जाउची बोले तमे जानिबो जे सेठी आ अट्रैक्टर तयारी हेबार नै एमिति जदि कमी कमी आछी बोले देखियो सेठी डिसिपेटिव सिस्टम एटा होची तमरो डिसिपेटिव सिस्टम एटा होची कंजर्वेटिव सिस्टम एटा होची तमरो देयर इज नो अट्रैक्शन अट्रैक्टर एला पूरा अनस्टेबल लेके पड़े ओके दिस इज वन ऑफ द जियोमेट्रिकल नेक्स्ट होची तमरो जोटा कि लॉरेंज अट्रैक्टर लेकिन ए तीनटा सेट ऑफ इक्वेशन अछि हला এটা एक्चुअली वेदर मॉडल जेते बेले वेदर को मॉडलिंग करथिले दैट टाइम एक्चुअली लॉरेंस डेवलप दिस मॉडल ओके x डॉट इक्वल टू सिग्मा y minus x z y dot equal to rx minus this is a very good model okay which actually predicts the weather okay you see what is the similarity butterfly रा जेमति देखा जाउची एटा को x वर्सेस z को प्लॉट करियो बोले से बोले देखा ओके सेति पय सम टाइम इट्स कॉल्ड ए बटरफ्लाई इफेक्ट देखनो एटा भी होची गोटे अट्रैक्टर बट y वर्सेस t की x वर्सेस t एगुडा को सब कंप्यूटर सिमुलेट कराई छी सेंसिटिव भी इनिशियल कंडीशन गुडा को सब टेस्ट कराई छी यू नोट डाउन दिस पैरामीटर ओके एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड लॉरेंज मॉडल सिग्मा इक्वल टू 10 b is equal to 8.3 r you can varies in between your 0 and 30 and you can plot it eta y versus रे आई छी but you can plot it x versus or z versus anywhere you will see the sensitive to initial condition you will see in 18 time step they get the average okay this is reproduced result so if you plot x versus t x versus y x versus z x versus y z versus y with the different view dekhibo it looks like a beautiful attractor okay so this is simulated by one of my students earlier student actually he simulated all this on the guidance of me and he generated all this plot see he nije korchi eta msc pila itomo simulated okay he has generated all these things and I am using his plot okay obviously I have guided him but you can solve this set of equations okay by using this parameter and you can see some beautiful nicely attractive nice attractor you will see that attractor is sometimes it's called your butterfly effect but Lorentz model itself is a huge topic okay हमें खाली एटे chaos विषय जानिबा के चाहू हे लागले जे एटा ए गोटे सिस्टम रे केवस किंतु लॉरेंस कोन बाय बोलिया मॉडल को चिंता कले दैट आई कैन टेल यू द रूट इज द योर weather prediction he is a meteorologist he was doing the weather prediction
Okay, and he was simulating that. He was an experimentalist, and he was simulating that, and he got this model. Okay, now this is the trajectory x versus t graph, y versus t graph. You know, it looks very, I mean, a beautiful picture. Okay, so now by doing this, ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡାଟାଟା randomness ନା chaotic, ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ କୋରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। इन प्रिंसिपल तुमको गोटे सिंपल वे रे बुझाई दूची ऑटो कोरिलेशन माने कोन, मैथमेटिक्स टा एटा कोड लिखिबो ताको जनरेट कर। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स होची ऑटो कोरिलेशन। हमर जो डाटा गुडा के अछि ताको ताको भितरे रिलेशन अछि ना, से माने जस्ट लाइक ए रैंडम हला। जदी रैंडम हेतबो बोले कोन हो, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भितरे किछि जदी कोरिलेशन जदी नथिबो, से इमीडिएटली इन वन टाइम स्टेप गोटे टाइम स्टेप एक्चुअली इट्स पॉइंट प्लॉटेड इट लाइक ए पॉइंट हला, गोटे टाइम भितर से ब्रेक डाउन हो, से तळ गोटे सिक्वेंस हला, देयर इज अ शार्प ब्रेक डाउन। बट if it is a, you know, chaotic data जदी हेतिबो हला, ताले से एक्सपोनेंशियल टाइप रो डिके हे आसे। ओके, एंड इट विल गिव ए ऑसिलेटरी बिहेवियर। ए केस रे है ऑसिलेटरी बिहेवियर। ऑसिलेटरी बिहेवियर होची माने लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर देयर, किंतु इनिशियली एटा एक्सपोनेंशियली डिके हे आसे। फॉर एग्जांपल तुम जो लैम्डा ल्यापनो एक्सपोनेंट रिलेशनशिप देखो, e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 1 t, से जो रिलेशनशिप रे गोटे एक्सपोनेंशियल टर्म पे अछि। ओके, they will decay like an exponential केते up to the time step, you know, 10 पर्यंत से एक्सपोनेंशियली डिके हे जाय। ए तळ को आछे केते 20 रे, किंतु ए केस रे तमे देखला जस्ट कन्फर्म कर जो ए केस रे देखो सडनली एटा तमरा डिके हे जाय। ओके, दिस इज माय रैंडम डाटा। रैंडम हले तमरा ए एक्सप्रेशन को केते फाइंड करियो, that time it goes to zero immediately. So randomness of chaotic test time, this is one of the thing auto correlation function you have to calculate. Okay, second तुमको जदि एटा कहबे जदि एटा होचे गोटे ईसीजी डाटा। ओके, ईसीजी डाटा अछि तुम टेस्ट करो randomness or not. ओके, electrocardiogram data, okay, this is a pregnant woman and this is, you know, lower trace is the coital electrocardiogram. Okay, and nonlinear projection technique रे सेमाने बाहर करछ। तुमको मुझे कहबी एटा डाटा तमरा chaotic और random, then you have to do a auto correlation function. Auto correlation function will tell you. ओके, तापरे आ गोटे टेस्ट होची randomness टेस्ट करिया पे होची तार फेज प्लॉट टा करी हला। फेज प्लॉट रे केमिति करंती ना, जे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन रे टाइम टा बाहर करी हला, तापरे डाटा को प्लॉट करबो। माने करा ए डाटा t is equal to something like 0, तापरे नेक्स्ट पॉइंट होची 1.25 मिलीसेकंड करे हला, एटा होची 12.5 मिलीसेकंड करे से नेक्स्ट डाटा को प्लॉट करी। एटा होची 25 मिलीसेकंड करे डाटा को प्लॉट करी। तार देखनो एगुडा को गोटे बढ़िया माने ट्रेजेक्टरी टे दोची, अट्रैक्टिव टाइप ऑफ दोची, बुझे लागले। सो some kind of your attractive shape भी दोची। एटा होची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रो योर फेज प्लॉट। तो ए बलिया फेज प्लॉट जदी आसला तबले ताले इमीडिएटली कहबो तो दिस इज chaotic। ओके, सिमिलरली आ गोटे सेल्फ सिमिलरिटी गोटे जानिया को हेले एटा कैलकुलेट करो कोरिलेशन डायमेंशन। ओके, एटा होची गोटे डाटा रो कोरिलेशन डायमेंशन कैलकुलेट करा कि जहार ए एक्सपोनेंट को एमिति एटा दिस इज द एक्सप्रेशन यू फॉर इन नेट आल्सो और सम ऑफ माय रिसर्च पेपर मो नार तुम सर्च करियो बोले एटा गोटे पाई। ओके, सम ऑफ द माय रिसर्च पेपर इट कंटेन्स दैट। ओके, जदी तमरा न्यू टा 2.73 यार माने होची जे ए सिस्टम जोटा नेछि ए सिस्टम रो डायमेंशन होची 2.7। देखि पय एटा वर्किंग द chaotic सिस्टम आउट इन फ्रैक्टल नेचर टास्क। ओके, next, so finally you can predict something, okay, something nonlinear hla। so if you have any question you can ask me related to your nonlinear, ke jodi kiछ पचारिबा मत पचार, तमर कोटा ए भीतर कोटा बुझियो ने कोन होची मत पचारिबा। ओके, any question ask me ला। एतिकिटा टेस्ट कले तमे नॉनलिनियर जानिबो, किंतु मो सजेशन होची I want to see this Henon attractor, I want to see this, you know, Dragon pendulum, I want to see this quadratic mat and this bifurcation diagram, and next this Lorentz attractor simulation. एतिकी मते करि कि देबो, बुझे लागले। then only I will know you have understood something, otherwise you are just listening and बुझेला।
कार कुछ क्वेश्चन अछि पचार ना बहुत कष्ट लागला टॉपिक टा रे अछि ना नहीं you can type me any question if you want तमे टाइप भी करि पारो जदि पचारिया पे ये लागु चले you can type it la I am just opening any question you can ask me related to chaos okay I'll try to answer and if you find the topic you know is this just a elementary idea so what I can do is you can take it as a homework everything you know first you solve this stability analysis এটা তুমি করো গোটে stability analysis you do it okay harmonic oscillator ro আরম্ভ করো simple harmonic oscillator then we will go to next step anon attractor then we should go to next step your stretching and folding eta तापरे quadratic logistic map then we will go to your कोन Lorentz attractor ହେଲା किछिटा पिला गोटे गोटे ग्रुप करिकिना समस्ते माने तमे केतरा अछो 20टा ना 25टा अछो समस्ते गोटे गोटे ग्रुप करिकिना गोटे ग्रुप Lorentz attractor आ गोटे ग्रुप होची तमरो कोन लॉजिस्टिक मैप आ गोटे ग्रुप होची तमरो ए ड्रिवन ऑसिलेटर आ गोटे ग्रुप एनोन अट्रैक्टर आ गोटे ग्रुप होची तमरो कोटा हार्मोनिक ऑसिलेटर हला 25 जदि स्टूडेंट अछो ले 5 टा हेकिना तुम करलो बुझि पाछ ना आई कैन हेल्प यू ओके करिवो हैं Yes. तुम कौन क्वेश्चन अछि पचारा एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू chaos एनी टाइम यू कैन आस्क मी ओके बिकॉज़ दैट इज वन ऑफ माय फील्ड आई डू रिसर्च ना आ आज रो क्वेश्चन रे कोन यदि कोठी भी किछ डाउट हला ओके यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल एबल टू आंसर आई थिंक सो ना और अछि किछ क्वेश्चन पचारा ना नेक्स्ट पचारिबो भाबि चिंती की हैं कौन कहूछ भाभी चिंती पचारियो हाँ आ गोटे काम कर समस्ते गोटे गोटे कंप्यूटर कोड लिखिकिना फास्ट मो पाके पठाओ लॉजिस्टिक मैप रो सॉल्यूशन गुडा ओके बाइफर्केशन डायग्राम एंड लॉजिस्टिक मैप इट वोंट बी डिफिकल्ट देखो हम कहि दो एक लॉजिस्टिक मैप लिखो पाई लॉजिस्टिक ए विकिपीडिया मानकर भी अछि जे कोन से जगह तुम विकिपीडिया देखियो सब जगह रे अछि कंप्यूटर कोड गुडा के सर्च कला है x n plus 1 तार mathematics detailed solution people they have done it okay and you know what is this guy Jesse Sport Jesse Sport chaos बहुत बड़े काम करছে व्यवस्था तो ना तुम स्टीवन स्टोवा साइट को जाइना देखो ये भी बड़ा काम कर स्टीवन स्टोवा बड़ा कोड कोड देई छी से बड़ा यूज कर उनका नाम हम कोड दे टाइम सीरीज एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस स्पोर्ट एटी गुड़ा जिनिस अच्छी बुझे लगे chaos and time series analysis you know वन डायमेंशन में ये पूरा बहुत बढ़िया करे देई छै बुझे लगे तार कंप्यूटर कोड बाइफर्केशन डायग्राम तार एक्सप्लेनेशन सब देई छै हला डायनामिकल से व्यापनम एक्सपोनेंट ओके ये सब तार कोड बड़ा डॉकिंग ऑसिलेटर ड्रिवन मतलब एटा मन रखि तो तार होछि तमरो chaos and time series analysis by Jesse Sprott हला ए गुडा कोड भी देछि तुम माने सब देखि परियो सॉल्यूशन एंड एक्सरसाइज एक करछि गुडा सब ओके यू कैन सी इट यू नो chaos रो डेमोन्स्ट्रेटर सॉफ्टवेयर अछि इंट्रोडक्शन अछि गुडा देछि
बहुत किसी सॉल्यूशन कर एटा मुझे कहउतली देखो एटा होचे सेंसिटिव टू इनिशियल फ्रॉम द सिगरेट स्मोक इट इज कमिंग आउट एंड सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन दैट्स व्हाट ओके पीरियड डबलिंग रूट टू केओस पूरा एटी एक्सप्लेन करछि ओके एंड ओके इट इज स्ट्रेंज अट्रैक्टर गुडा को सब अछि सब एट देखो d0 d1 d0 d1 ये सब एनोन मैप no एनोन मैप का जो सॉल्यूशन गुडा करछि so you can look at this हला ए वेबसाइट भी देख परियो ए लोक बहुत गुडे कोड भी देछि हला कोड गुडा के भी तमे एनालिसिस करि परियो टाइम सीरीज एनालिसिस रे गुडा जिनिस कहिछि ओके एंड यू नो गुडा मैथमेटिक्स फ्रैक्टल ए जो फ्रैक्टल विषय भी कहिछि गुडा हला ऑटो कोरिलेशन जो गुडा तुम डिस्कशन करथिले फ्रैक्टल गुडा का तापरे स्पोर्ट्स फ्रैक्टल गैलरी in this gallery you will get different kind of fractal देखो ना एगुडा सब chaos demonstration ना स्ट्रेंज अट्रैक्टर एठी बहुत गुडे करछि से बुझे लागे तो तुमको जानिबा को हेले ए सब जिनिस गुडा को ठीक है तुमको इन्वेस्टिगेट करबा को पड़ियो हैव सेम एग्जांपल नेचुरल फ्रैक्टल कॉलीफ्लावर ओके सो यू कैन लुक एट इट you can take a little bit of dig on it and you just read it and ask me any question you have any doubt ask me I will able to answer okay समझते चेष्टा करो okay and do the calculation but in examination I will ask definitely this stability analysis ହେଲା ए पार्ट मु पचारे स्टेबिलिटी एनालिसिस जदि जेते तर ना बुझी परछ से तर मु पचारे बोले आई कैन टीच यू बट यू अंडरस्टैंड दिस ए पार्ट जदि ना बुझी परला बोले तुम आपको फिजिक्स बुझिया बहुत मुश्किल है बुझले केओस रो किछि बुझी परनी खाली देखिबा चित्र गुडा का अछि and I'm just a spectator, mute spectator. No. Okay, you do the stability analysis, do the mathematics, take a system, and do the stability analysis of that system, and you understand. Please read the book Nonlinear Dynamics and Chaos by Steven Skovich. La, amaro jodi question kichi hebo mate pachariba hela. बुझिला ना any question अछि कि आरो जदी किछ question अछि मते पचार. It's an advanced topic, but read it. Anytime you can ask me the question if you want. Okay, don't be shy and write the code. मु तुमको एति कहू जे घर बसी बसी कोडिंग करो काहे ना कोडिंग जदि न सिखियो आज डेट रे you will be like a illiterate. I can tell you. ना कोडिंग is must for a research work. ठीक अछि? Yes sir. सफर आज्ञा सर एनी को तो तमरा किछ क्वेश्चन नै जदि क्वेश्चन हेबा मते पचारिबो आ गोटे डाउट क्लियरिंग क्लास जदि नबा हला दिस इज द एंड ऑफ योर कोर्स बेसिकली हला मु कहू जे किंतु केओस रो समस्त करो ओके yes sir रखिबी आज्ञा सर जदि दरकार पड़ियो मु डाउन स्लाइड जदि किछ होला आपन जणैबो कोन हां जदि दरकार पड़ियो मु स्लाइड हां स्लाइड भी शेयर कर देबे किछ असुविधा नै हला आज्ञा सर सेना मेल स्लाइड भी कर शेयर कर हां मु मेल कर दे तुमको मेल कर दे समस्त को पठे दो हला ठीक है रेडी जदि क्वेश्चन होची किंतु मो क्वेश्चन होची जे तमे कंप्यूटर रे करे कि मते देखिबो ताले मु जानि जे तमे किते लर्न करछ ओके आ कंप्यूटर जदि किछ न करूछ माने तमे जस्ट खाली कोन लिसन यू आर नॉट वर्किंग सेटा धरा जिवो ओके डोंट बी लाइक ए लिसनर यू जस्ट डू सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स वर्कआउट आई विल हेल्प ओके थैंक यू रखुछ दा आज्ञा ओके सर